The course for which we have arranged this session is regarding the Service Desk Analyst course. Okay, and whenever the training is done, and if you get a job, if you get a chance to work in the IT company, after completing this training, so either you will be hired as a Service Desk Analyst, or you can get the opportunity to work as an IT analyst, or help desk analyst, or engineer, support engineer, Office 365 admin. Okay, so these are the designation of the title that can be given to you. That the designation title can differ from company to company, but the roles and responsibilities will be same. Okay, roles and responsibilities are going to be same. It doesn't matter if you have been hired as a service desk analyst or as an IT analyst, help desk engineer, support engineer. Okay, now let's understand what exactly is service desk analyst. So basically, a service desk is the first point of contact for every IT related issue. Either it's the hardware related issue or the software related issue. So whenever you will be joining a company as a service desk analyst, so users, affected users, they will be reaching out to you, and then they will be discussing their hardware or software related issue. They can come up to you that, hi, I'm facing issue with my laptop, I'm unable to log in into the laptop, or I'm trying to log in into the VPN, I'm unable to log in into the VPN, my Citrix is not working, my browser is not working, I need to update the software, I need to update my system. So whenever there will be any kind of hardware software related issue, you will be the first point of contact for them. Okay, now if you have I think you must have ordered something from Swiggy and Zomato, and if you face any issue over there, so what you do, you start chatting with the customer support, right? So whenever you start chatting with the customer support in case you face any issue while ordering on Zomato or Swiggy, so the mode of channel through which you are reaching out to the customer support guy is chat. In that scenario, the mode of channel is chat. So in the same way, whenever you will be working as a service desk analyst, affected users will be reaching out to you through multiple channels. Okay, so the affected users, they can reach out to you through email. Okay, they can drop an email that, hi, I'm facing issue with my laptop, I'm unable to log in into the laptop, or I'm using my VPN but it's not going through. Okay, so the first mode of channel through which I affected user can reach out to you is email, or it can be chat. Okay, you will be given a login credential to log in into a chatting portal, and then you will start doing the live chats with the affected users. Okay, but like in 5% of the companies you will be getting the chatting interface over there. Okay, most of the companies did not use chatting as the medium to interact with the users, but like 5% we can assume that you can get the mode of channel as chat as well. The third mode of channel through which the affected user can reach out to you, it can be a ticketing portal. Okay, so different companies, they use different ticketing portal. It can be ServiceNow, it can be Zendesk, it can be Zira, or it can be any other ticketing tool. The fourth mode of channel we can say is call. Every user, whenever employee joins a company, so they are provided a toll free number that in case you face any issue, just call on this number, and our IT team, they will be available to help you out. So whenever you will be joining as a service desk analyst, you will be given the VoIP service. You have to log in into the VoIP service, and then you will be available to receive the call. So users will be calling you. You will have to receive the call, and then they will be discussing their issues. That, oh, hi Ravi, I am facing issue in connecting to the VPN. How can I connect to the VPN? Then you will be providing the troubleshooting step. So these are the different mode of channels through which a user can reach out to you. Okay, now whenever they will be reaching out to you, so there should be a medium through which you can communicate with them. Okay, for example, they dropped an email to you. Okay, now how to proceed, how to reach out to them, and then providing the troubleshooting step, or if they create a ticket over the ticketing portal, how to reach out to them. So either of these cases, either it's the email or chat or ticketing portal or call, you need to
or reach out to the user through Microsoft Teams. Once you have received the issue from the user, now you will reach out to the user through Microsoft Teams. Like 90% of the companies, they are using Microsoft Teams right now to interact with the affected users. Okay, so email, you will be receiving an email, then chat, you will be logging into the chatting portal, and then you will be chatting with the affected users in the live mode, and then you can get a call as well. Now here comes the third channel, which is the ticketing portal. And as I said, that it can be ServiceNow, it can be the Zendesk or the internet ticketing portal. And the portal on which we provide the training is ServiceNow, because 70% of the companies, they use ServiceNow. Okay, so we provide the training on ServiceNow. If you can see my screen, I can show you the interface of ServiceNow. So basically, this is the portal, ServiceNow portal, on which you will be receiving the tickets. So basically, a ticket is a record of an issue. Okay. Now let's assume I am now acting as a affected user. I am a user. I am, working in an IT company, and suddenly, I am unable to log in into the VPN. Okay, I am trying to connect to the VPN, but I am unable to log in into the VPN. So I know that I have been given a link, and I have been asked that whenever I face any kind of issue related to the IT, so I need to create a ticket. I need to record my issue, and then someone from the ITT, they will be helping out to me. They will be reaching out to me, and then they will be uh, helping me with the troubleshooting step. Okay, so now let's assume that I am a affected user. I am facing issue with my VPN. So I open this link, and then I can see this interface. Okay, so let's assume that my name is Abel. Okay, Abel Tutor. And as I said, that I am unable to log in into the VPN. Okay, it's up to me, if I want to describe more about the issue or not. But as I said, that it is not a mandatory field. I just mention, a brief about my issue which I am facing, and once the IT team, they will be reaching out to me, so then I'll discuss the issue with them. Okay, so I just mentioned my description, short description. I have mentioned my name, and then I'll click on submit button. As soon as I click on submit button, a ticket has been created on my name. You can see the ticket number INC00. Okay, now let's switch to the another interface. If you can see the interface, this is the dashboard. You will be seeing this interface when you will be working as a service desk analyst. This will be visible to you only whenever you will be joining a service desk team. So this screen visible will be visible to you, and then you can see, if the users are creating ticket or not. Okay, now let's assume that I am a service desk guy. I am logging into the service now right now, and I am supposed to monitor the service now. Monitoring means I need to check if I am receiving any new tickets or not. Okay, so as you can see, the unassigned incidents count is 17. Okay, correct, it's a dashboard. Okay, you can see, how many incidents have been opened today, how many unassigned ticket. Unassigned means the ticket that has not been assigned to any of the IT guy, right? So whenever you will be joining any service desk team, okay, hota kya hai, for example, let's assume that you have 10 members in the service desk team. Okay, and now four mode of channels are there. So your TL, your team lead, will divide the 10 members to work on these four channels. Okay, they will say, okay, two people will work on the email. उनको क्या करना है, ईमेल मॉनिटर करना है. कोई भी नया इशू आएगा, दे नीड टू रीच आउट टू द यूजर. हाय, माय नेम इज अमित, आई एम फ्रॉम द सर्विस डेस्क टीम. आपको क्या इशू आ रहा है, जस्ट गो टू नो दैट यू आर फेसिंग इशू विद द वीपीएन. देन ही विल प्रोवाइड द ट्रबल शूटिंग स्टेप. और आपके टीएल ने बोला है कि दो लोग ईमेल पे काम करेंगे, दो लोग चैट पे काम करेंगे. इसका मतलब क्या है, वो चैटिंग पोर्टल में लॉग इन करेंगे, जो भी लाइव चैट आएगी वो उनको सपोर्ट करेंगे. फोर पीपल आज काम करेंगे कॉल पे. लाइक फोर पीपल विल लॉग इन इनटू द वीओआईपी सर्विस. फॉर एग्जांपल, स्काइप इज अ वीओआईपी सर्विस. वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे कॉल रिसीव कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ फिजिकल सिम, राइट? सो टू पीपल, टू guys, service desk guys on email, two on chat, four on कॉल. नाउ टू मेंबर आर लेफ्ट, तो वो बोलेंगे दो आज
टिकटिंग टूल पे काम करेंगे, वो आज सर्विस नाउ मॉनिटर करेंगे। तो सर्विस नाउ मॉनिटर करने का मतलब यही है कि यू नीड टू लॉग इन इनटू द सर्विस नाउ, यू नीड टू चेक कि कोई नया टिकट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड हाउ टू डू इट। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उसको रिफ्रेश करना होता है। After every like 10 minutes 15 minutes you will be refreshing the tickets and you will see कि कोई नया टिकट आया कि नहीं आया। ओके, अभी अगर आपको याद हो कि मैंने यूजर के बिहाफ पर एक टिकट बनाया था, ठीक है, टिकट बनाने के बाद मैंने अपनी स्क्रीन अभी तक रिफ्रेश नहीं करी। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो मेरा टास्क है मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें कोई नया टिकट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो एज सुन एज लाइक आई क्लिक ऑन रिफ्रेश, द काउंट हैज बीन इंक्रीज बाय 1, क्योंकि मैंने एक टिकट बनाया था ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। सो ये जो आपका अभी इंक्रीज हो गया, ये 17 से 18 हो गया है। 17 से 18 हुआ, इसका मतलब ये नाउ यू कैन सी कि अच्छा एक नया टिकट आया है, ठीक है। मैंने टिकट ओपन किया, आई कैन सी ओके द अफेक्टेड यूजर इज एबल ट्यूटर। इशू क्या आ रहा है, आई एम अनेबल टू लॉग इन इनटू द वीपीएन। So as a service desk guy, the first task, the first thing that I need to do is to acknowledge the ticket. Acknowledging का मतलब ये है कि जो यूजर ने टिकट क्रिएट किया है, आपको उस टिकट को अपने आप को असाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज द स्टेट टू इन प्रोग्रेस एंड असाइन द टिकट टू योर नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी कोई ज्वाइन करेंगे, सो देन असाइन टू में आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल मेंशन योर नेम। सो जैसे ही आप अपना नेम मेंशन करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन अपडेट, दिस टिकट विल बी असाइन टू यू। और जैसे ही आप इस टिकट को अपने आप को असाइन करेंगे, एक ईमेल शूट होगा यूजर को कि रवि शर्मा ने ये टिकट असाइन किया, ही इज द गाय हु विल बी हेल्पिंग आउट टू यू। अब आपने टिकट असाइन कर लिया, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू प्रोवाइड द ट्रबल शूटिंग स्टेप टू द यूजर, ठीक है। अब आपको यूजर को ट्रबल शूटिंग स्टेप देना है, तो इसका मतलब आप उसको रीच आउट करेंगे थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। अब आपको यूजर के बारे में जानना है कि यूजर है कौन। एबल ट्यूटर इज द यूजर, आई विल क्लिक ऑन प्रीव्यू दिस रिकॉर्ड। प्रीव्यू दिस रिकॉर्ड पे आपने क्लिक किया, आई कैन गेट द यूजर आईडी, आई कैन गेट द ईमेल आईडी, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, मैं यूजर आईडी कॉपी करूंगा, आई विल पेस्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, देन आई विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। हाय एबल, दिस इज रवि फ्रॉम सर्विस डेस्क टीम, दिस इज रिगार्डिंग योर टिकट नंबर, आप टिकट नंबर उसको दे देंगे। I can see that you're facing issue with the VPN. Is it a good time, like I can connect with you, or is it a good time I can start the troubleshooting? तो आप उससे बात करोगे, वो आपको इशू बताएगा, उसको आप कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप देंगे, ठीक है। नाउ दो चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, इधर द इशू विल रिजॉल्व और इट वॉन्ट बी रिजॉल्व, ठीक है। आपने जो ट्रबल शूटिंग स्टेप दी है, तो या तो उससे इशू रिजॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर उसका इशू रिजॉल्व होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली टिकट क्लोज कर देना है, ठीक है। स्टेट पे आके आप रिजॉल्व करेंगे एंड देन यू विल क्लोज द टिकट। अगर वो इशू रिजॉल्व नहीं होता है, what you will do, you will assign the ticket to your senior। असाइनमेंट ग्रुप में आप उस टीम का नाम लिख देंगे जिसको आप उसको एस्केलेट करेंगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द L1 लेवल, तो आप L2 या L3 को उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आप लायबल नहीं हो किसी चीज के लिए, you will be just providing the basic troubleshooting step। After performing the basic troubleshooting step, if the issue is still is still there, then you will escalate or forward the issue, simple, correct। So you will be getting a lot of the hardware and the software related issues। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेसिक ट्रबल शूटिंग देंगे, देन आप उसको एस्केलेट कर देंगे अगर वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है। दिस इज हाउ these सर्विस डेस्क गाइस दे वर्क। सो जैसे कि मैंने बोला कि किसी दिन हो सकता है कि आपको टिकटिंग पोर्टल मॉनिटर करने के लिए देते हैं, तो जितने भी उस पर आपके टिकट्स आएंगे आप उस पर काम करेंगे। कभी हो सकता है आपको कॉल्स अटेंड करने के लिए बोलें, कभी आपको ईमेल पे काम करने के लिए बोल सकते हैं। चैटिंग का 5% ऑफ द कंपनीज दे यूज चैट, अदरवाइज ईमेल, टिकटिंग पोर्टल, कॉल, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्विस डेस्क में एंटर करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 4 चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और उन 4 मॉड्यूल्स पे हम लोग ट्रेनिंग देखते हैं। सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज बेसिक ऑफ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजीज। The second is troubleshooting of hardware and software related issues. The third one is ServiceNow training. The fourth one is Azure Administration training. Not complete Azure Administration training, इसमें आपकी रहने वाली है 10 to 20% of the Azure Administration training. So basic of networking में राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे 30 to 40% क्वेश्चंस they will be the theoretical questions from the networking terminologies,
कि राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, लाइव एग्जांपल ऑफ यूडीपी क्या है, एंड व्हाट इज द एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी, व्हाट इज डीएनएस सर्वर, द queries of DNS server. 30-40 theoretical percent theoretical questions would be there. So we like provide like the training on the basic of networking terminologies. Then we provide the training in the second module on the troubleshooting of the most common hardware and software related issues, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एटलीस्ट ट्रबल शूट करना आना चाहिए मोस्ट कॉमन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज को. फॉर एग्जांपल, द इंटरव्यूअर कैन आस्क इफ द user is facing some issue in sending or receiving the email, so what troubleshooting steps you are going to perform with the affected user. Okay, then third module हमारा है सर्विस नाउ, जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है. इट्स सर्विस नाउ विच इज द टिकटिंग पोर्टल. सो वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑन सर्विस नाउ कि कैसे आपको टिकट एक्नॉलेज करना है, कैसे आपके पास टिकट आएंगे, व्हाट इज द स्टेट एंड व्हाट इज एन इम्पैक्ट अर्जेंसी, हाउ टू साइन द ग्रुप एंड हाउ टू पुट द कमेंट्स ऑन द नोट. कैसे आपका जब आप काम करेंगे, जब आप टिकट असाइन करेंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, पैरामीटर्स है जो आपको याद रखनी है. सो बेसिकली वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑन सर्विस नाउ एंड we will be helping you with the credentials so that you can log in into the service now and then you can practice by your own as well. Okay, then the fourth module जैसे मैंने आपको बताया, it's the Azure Administration, not the complete training, क्योंकि जब भी आप एज ए सर्विस डेस्क एनालिस्ट काम करेंगे आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी. रिक्वेस्ट, I need to reset my password, I need to reset my MFA, just try just assign this particular license on my name, and you can get the request from the HR that this particular employee has joined our company, please create the official email ID. Or you can get the request from the supervisor manager that please add this particular user in the distribution list, or please create this distribution list or distribution group. So like you will be getting these kinds of requests, and these requests are fulfilled through Azure Admin. So basically Azure Admin has a Microsoft Enter ID through which you will be resetting the MFA, assigning the license, assigning the privileges, and resetting the पासवर्ड, क्रिएटिंग द ऑफिशियल ईमेल आईडी. ये सारा काम आपका Azure एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है. इसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. उसके बाद once the training is done, then the resume creation would be there and mock interviews would be there, and then we will be helping you with the internship letter or experience letter, whatever is required at that time. And once everything is done, then we can help you with the placement opportunities. Okay, so let me stop the recording so that you can ask the question whatever you want to ask. Just give me a moment.